Good morning, class 12 students. Today we will gonna start a new chapter, optics. Now the optics of a syllabus, which is in the second book, is divided into two parts. The first chapter is ray optics. The second chapter is wave optics. Okay. Now there is a small change in the syllabus. Now listen very carefully. You received a PDF chapter ray optics. In that PDF, from page number 1 to 9, that is not in the syllabus. That means in ray optics, first you need to study reflection, then you need to study refraction. The reflection has been removed, okay, but it is very easy, which you studied in class 9 or 10. So if you wish, you can go through it for your entrance. Okay, we will start with the topic, the syllabus, that is refraction. Okay, that is from page number 9. Okay, so you check out this topic, refractive index of a medium. So we'll start from this page number 9. So we'll start from 9. Okay. Now, what is refractive index of a medium? Refractive index of a medium is also called as optical density. Now, this word is quite interesting. What is optical density? Okay, like we studied in class 10. Whenever light undergo a change in medium, light bends. That is called as refraction. ये हमने पढ़ा हुआ है, right? Now, this change in medium, कैसे पता चलेगा that the medium is changing? कैसे पता चलेगा that light is undergoing a change in medium? From the English word, like if I say the light traveling from water to air, yes, एक medium water है, एक medium air है. That means the medium is changing, right? No, this perception is incorrect actually. From the English word, we cannot understand whether the medium is changing or not. In physics, there is one parameter which helps us to understand whether the medium is changing or not. If that parameter value changes, then we can say that the medium is changing. That parameter is called refractive index of a medium, that is optical density. Now, what is the meaning of optical density? Optical density मतलब क्या होता है? For the optics, that is light, for the light traveling through any medium, how much density that medium offering to the ray of light, offering to the travel of the ray of light, that is called as optical density. Density मतलब क्या? घनापन. ओके, उस रे ऑफ लाइट के लिए वो मीडियम कितना घना है, ओके, लाइक कितना इजीली वो लाइट ट्रैवल कर सकता है और कितना मुश्किल होगा ट्रैवल करने के लिए. दोस ऑल थिंग्स आर टोल्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. सो दिस इज द फैक्टर व्हिच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेदर द मीडियम इज चेंजिंग और नॉट चेंजिंग. क्लियर? ओके, सो हम इंग्लिश वर्ड से पता नहीं करेंगे कि मीडियम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हम पता करेंगे इस फैक्टर से. अगर इस फैक्टर का वैल्यू चेंज हो रहा है फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, देन द मीडियम इज चेंजिंग. इफ the medium is changing but the refractive index value is same, that means according to physics the medium is not changed, there is no refraction. Okay, now the students get confused in this topic. What is refractive index of medium? This is also called as absolute refractive index. There is one more refractive index called as relative refractive index. उसका कोई physical significance नहीं है बेटा. That is just help us to understand numericals, that's all. Okay, all the physical significance are from this topic. Okay, that is refractive index of medium, also called as absolute refractive index, also called as refractive index of medium with respect to air. Okay, सब same नाम है. तो मैं absolute refractive index बोले, that means I'm talking about refractive index of medium with respect to air. तो मैं बोले refractive index of medium, that means I'm talking about absolute refractive index of that medium. That means I'm talking about with respect to air. All are same. Now, what is the denotation? Denotations are this: refractive index of medium 1, or refractive index of medium 1 with respect to air, or refractive index of medium 1 with respect to air. This is in terms of n. Sometimes we write mu also. Refractive index of medium 1, refractive index of medium 1 with respect to air. Mu, refractive index of medium 1 with respect to air. Okay, so with respect to air ना basically मेरे books में नहीं दिखेगा. Okay, so please remember these things. But from now, I will always write N1. When I say N1, that means it is refractive index of medium 1 with respect to air. With respect to air, we don't write. Okay. Now, what is the standard definition of refractive index of medium? It is the velocity of light in air by velocity of light in that medium. Medium में कितना velocity of light है? Air में कितना velocity है? Okay. This is the basic formula of absolute refractive index of any medium. Velocity of light in air by velocity of light in that medium. Okay. Now, from this formula only we can derive few other formulas also. Okay. Like for example, we know velocity equals to frequency
ओके इनटू वेवलेंथ, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में. Velocity is nothing but frequency to wavelength. Okay. From using this formula and using few concepts which I'm about to discuss right now, okay, we can derive more formulas in terms of wavelength also. हम wavelength के फॉर्मूला भी absolute refractive index का फॉर्मूला निकाल सकते हैं. Okay. Before that, you have to understand few physical significance which is written as a note in your page number 9 in this topic. The first is that what is the use of this value, which I already told you. This value helps us to understand whether the medium is changing or not. If the absolute refractive index value of a medium is changing, then only we can say the medium is changing. Now, if I take two cases, for example, we have a medium 1 whose refractive index is n1. If I say refractive index of n1, that means I'm talking about absolute refractive index. It is greater than a medium 2 whose refractive index is n2. I say the refractive index of medium 1 is greater than medium 2. That means I can say that the medium 1 is denser than medium 2. Okay, so refractive index value also helps us to understand whether the medium is denser or rarer. Or we can say medium 2 is rarer than medium 1. Okay, so refractive index value से हम क्या पता कर पाएंगे भाई? Whether the medium is changing or not, or whether what is this and not or, and whether it is a denser medium or a rarer medium. Clear? Okay. Now, few more things you need to understand is that C, refractive index of any medium is C by V, and we know C is always greater than V. Velocity of light in air is maximum. In rest all other mediums, the velocity of light decreases. Okay, that means this is a fact. Velocity of light in air should be always greater than velocity of light in any other medium. Any medium. So if I say C by V greater than 1, then what? N is greater than 1. That means any medium absolute refractive index or refractive index is always greater than 1. It can never be less than 1. You understand this? Okay, तो इन चीजों को तुम्हें ध्यान रखना है. कुछ conceptions है, कुछ facts है which you have to remember. Okay, so absolute refractive index से हम पता कर सकते हैं the medium is changing or not. 1. Next, this value helps us to understand whether the medium is acting like a denser or a rarer medium, and its value should be always greater than 1 because C is always greater than V. Okay, next, अगर there is a change in medium, whenever there is a change in medium, okay, that means refractive index value changing. ये मुझे समझ में आ गया? Okay, light has 3 parameters. 3 parameters of light you have to deal with. What are those 3 parameters? One is velocity, another is wavelength, and the third one is frequency. Now, this you have to understand very nicely. Whenever there is a change in medium, frequency never changes. Okay, frequency कभी change नहीं होगा. This is also in the notes. Frequency never changes. Velocity and wavelength changes. Okay, जब ये तुमने क्लास 10 में most common question पढ़ा होगा, whenever there is a change in medium, frequency do change. Okay, अब मुझे पता चल गया कि frequency change नहीं हो रहा. So now I will derive one more formula in terms of velocity, in terms of wavelength. Velocity of light in air equals to frequency of light in air into wavelength in air, because velocity equals to frequency to wavelength होता है, divided by velocity of light in medium is equals to frequency in that medium into wavelength in that medium. Now see, wavelength का वैल्यू मैंने lambda a lambda m लिखा है, लेकिन frequency ff लिखा है. क्यों? Because just now we studied that frequency medium के साथ change नहीं होता है. That means air में जो frequency होगा, medium में वही frequency होगा. That means we got new formula lambda a by lambda n. Okay, so we got 2 formulas of absolute refractive index. One is C by V, and this is lambda a by lambda n. Now, from these 2 formulas, we can predict 2 different things. What are those? We understand that out of 3 parameters of light, that is frequency, wavelength, and velocity, frequency don't change with change in medium, but velocity and wavelength changes with change in medium. How it changes? Whether it increase, whether it decrease, that we can understand from these 2 formulas. Okay, कैसे? So you have to mug up only one formula, that is this. बाकी कोई फॉर्मूला रटना नहीं मारना है. तुम्हें पता है रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू C by V होता है, और तुम्हें पता है ये फॉर्मूला, और तुम्हें पता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता. बस ये 3 चीज को यूज करके बाकी सारे कहानी कर सकते हो. Now, wavelength in air, wavelength of light in air is constant. That means refractive index is inversely proportional to wavelength. Similarly, C is a constant. Velocity of light in air is constant. That means refractive index is proportional to inversely proportional to velocity. From there, we can understand
that if the refracting index is increasing, अगर refracting index का वैल्यू बढ़ रहा है that means wavelength का वैल्यू घटेगा, अगर refracting index का वैल्यू घट रहा है that means wavelength का वैल्यू बढ़ेगा. So what I understand that refracting index का वैल्यू बढ़ रहा है, किसका refracting index का वैल्यू बढ़ रहा होगा? Denser medium का. That means when the light enters the denser medium, its wavelength decreases. When the light enters rarer medium, refracting index घट गया, that means it is a rarer medium. Then its wavelength is increasing. Same here, if the refracting index is increasing, velocity of light is decreasing. If the refracting index is decreasing, velocity of light is increasing. Same, if a light enters a denser medium, मतलब उसका refracting index value बढ़ गया, तो उसका वेलोसिटी घट जाएगा. ओके, इट्स अ कॉमन सेंस आल्सो. अगर एक लाइट ज्यादा डेंस में घुस गया तो उसका वेलोसिटी घटना है, उसका वेवलेंथ भी घटेगा. अगर एक लाइट रेयर मीडियम में चला गया तो इट कैन इजीली ट्रैवल, दैट मींस वेलोसिटी विल आल्सो इंक्रीज, इट्स वेवलेंथ विल आल्सो इंक्रीज. आई होप यू अंडरस्टैंड क्लास. ओके, सो दीस थिंग्स आर क्लियर. ओके, नेक्स्ट एक मार्क्स का एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पूछता है. What do you understand by refracting index of water is 1.33? If I say refracting index of water, for example, is 1.33, what do you understand by this statement? ये अजीब सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन समझ में आया? What do you understand by refracting index? Absolute refracting index of water is 1.33. So actually you need to explain this definition. If I say refracting index of water is 1.33, and what is refracting index of water? Velocity of light in air by velocity of light in water is 1.33. Okay, that means velocity of light in water is c by 1.33. This is the meaning. इसको तुम्हें इंग्लिश में लिखना है. So absolute refracting index of water is 1.33. This means that the velocity of light in water is 1 by 1.33 times the velocity of light in air. Or velocity of light in water is decreases by 1 by 33 times the velocity of light in air. बस खत्म. Okay, understand? No doubt, class. Now this is all about absolute refracting index. So what are the things we understand? We understand that absolute refracting index is also called as optical density. This is also called as refracting index of a medium. किसी मीडियम का refracting index का बात करना हो मतलब absolute refracting index का बात कर रहे हैं. And that is always with respect to air. Okay, we understand various factors from the value of refracting index. मतलब absolute refracting index क्या क्या? Whether the medium is denser or rarer, or whether there is no change in medium. अगर दोनों refracting index सेम हो जाएगा, n1 equals to n2 हो जाएगा, यहाँ पे दो केस डिफाइन किया, यहाँ पे n1 बड़ा है n2 से, मतलब medium 1 is denser. Okay, so then we understand that absolute refracting index का value always greater than 1 होता है. Okay, then we understand that out of the three parameters of light, wavelength, velocity and frequency never changes. Wavelength को कैसे चेंज होता है, velocity कैसे चेंज होता है, that we can derive from here only. Don't mug up, huh? Please don't mug up, because there are lots of formulas in ray optics and everything you cannot mug up. You have to understand the concept. Okay, we know the value c by v. From there we can substitute here, we can get the answer. Okay, so from there in similarly क्या पता चला, inversely proportional. मतलब अगर लाइट डेंसर मीडियम में घुसेगा मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो उसका वेवलेंथ घटेगा, उसका वेलोसिटी घटेगा. ओके, नाउ व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? नाउ दिस हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट्स जस्ट बी यूज्ड फॉर अ न्यूमेरिकल. इफ आई से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, आल्सो राइट लाइक दिस. इसका मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, बस 1 with respect to 2, 1 with respect to 2. तुम्हें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है. मीडियम 1 with respect to 2 is refractive index of medium 1 by refractive index of medium 2. बस, और कुछ याद नहीं करना है, बाकी सारा चीज वहां से आएगा. ओके, so whatever I will do right now, those all things will come from there. So you have to remember that formula, you have to remember this concept, and you have to remember that frequency never changes. बस, बाकी सब अपने आप आएगा. Okay, and you have to remember this expression. 1 with respect to 2 is 1 by 2. What is this 1? That is relative absolute refractive index. That is 1. Can I say c by velocity of light in medium 1, c by velocity of light in medium 2. That is v2 by v1. So n12 is v2 by v1. And you get this next formula. So don't mug up this formula. You have to remember only one formula, class. Okay. Next, velocity of light in medium 2 is frequency of light in medium 2 into wavelength in medium 2. Velocity of light in medium 1, frequency of light in medium 1 into wavelength of medium 1. Again frequency change होता है, same रहता है,
तो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला आ गया lambda 2 by lambda 1. Okay, so these things you just have to understand. You don't need to mug up. The only thing you need to mug up is this. Okay, so this is all about understanding whether the medium is changing or not. Okay, only for that reason I have taught you what is absolute refractive index. Now we'll go to the actual topic, that is refraction. Okay class, now next topic is refraction of light. Definitions you already know. What is refraction of light? The phenomena of bending of light when the light undergoes a change in medium is called refraction of light. Light जब bend करता है, कब bend करेगा? जब there is a change in medium. Okay, जैसे वो change in medium क्या light bend करता है? How it bends, everything I will discuss. Okay, that phenomena is called change in medium. Refraction of light. Okay, now ये जो मैंने पढ़ा अभी, that the bending of light when the light undergoes change in medium. How we understand that light undergoes change in medium? By the refractive index value of the medium that I told you already. Okay, absolute refractive index value. Now, why this happens? That is cause of refraction. ऐसा क्यों होता है? Reason क्या है कि light bend करता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा that whenever there is a change in medium, the velocity changes. अगर लाइट डेंसर मीडियम में घुस गया तो वेलोसिटी घट जाएगा, अगर लाइट रेयर मीडियम में घुस गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा. This change in speed of the light, due to this change in speed of the light bends. That is cause of refraction. Okay, now a very important thing you need to understand that since we did not study what is reflection, okay, which is out of the syllabus, which is removed from the syllabus. So let me tell you about the basic difference between reflection and refraction. तुमने पढ़ा था reflection is returning back of light, but मैं इसका definition अलग पढ़ते हैं हम class 12 में. Reflection is also called as bending of light without any change in medium, and refraction is the bending of light with change in medium. This is the basic difference between reflection and refraction. Now, reflection we can study separately. When we study reflection, there is nothing called as refraction coming into it. But refraction cannot be segregated from reflection. Okay, if a light ray is refracted, some part of the light also undergoes reflection. But that means what I'm trying to say is that, oh my God, my dog is barking. Wait for some time, class. My Oscar is an Oscar only. Okay, who is an Oscar? My pet dog. Okay, so what I'm trying to say is that whenever there is a refraction, that means whenever there is a change in medium, light bends. In that procedure, there is some part of light which is always reflected back. Okay, so if I say that, I will show you in two diagrams. Listen. For example, this is an interface. What is an interface? It is a separation between two mediums. This is medium 1 of refractive index N1. This is medium 2 of refractive index N2. I am saying you that N2 is more than N1. That means ये हो गया denser medium, क्योंकि N2 बड़ा है, और ये हो गया rarer medium. ठीक है ना? अब take any ray which is going from rarer to denser. Rarer से denser जा रहा है. This is an incident ray. What's your first job here? Your first job is to draw a normal at the point of incidence on the interface. At the point of incidence on the interface. Now what is interface? It is a plane separating two media. एक plane है जो दो medium को separate करता है. ठीक है? That is called as interface in short. नहीं तो उतना बड़ा लिखना पड़ेगा. Plane separating two media. Okay? Okay. So what I am taking, the light is going from rarer to denser medium. So wherever the light incident at the interface, there you have to make a normal. So this is the normal. You get normal to the interface. Now what is this? This is angle of incidence. Okay. Now you need to remember two things which is studied in class 10. The light supposed to go straight like this. Okay. But what is happening to the light? This is the actual path of incident ray. But what is happening to the light? The light is undergoing the change in medium, rarer to denser. So when the light undergo rarer to denser, okay, light bend towards the normal. बस ये दो चीज याद रखना है क्लास. अगर denser से rarer जाएगा, away from normal bend करेगा,
ओके और अगर रे रे टू डेंसर जाएगा टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। आई थिंक मैंने थोड़ा उल्टा बोला, लिखा कुछ बोला कुछ। दैट मीन्स इफ द लाइट एंटर्स रेयर मीडियम it will bend away from the normal. If the light enters denser medium, it will bend towards the normal. So it's bend towards the normal. What does that mean? See, the light is going like this. It's supposed to go like this, but where is the normal? Normal is this side towards left, so it will bend towards left like this. Okay, the light ray will bend towards the normal because it's going towards denser medium. So जब ये light denser medium में घुसता है, it bend towards the normal. जैसे ऐसे देखो, this is the bending. ये बेंड इधर किया तो व्हाट इज दिस रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। so this is the normal figure, okay, but if you want to draw exact figure what we studied in real life and note is that whenever there is a refraction some part of light will always undergo reflection. That means there will be some part of light which will undergo reflection like this in the same medium, such that this is reflected ray with the normal angle of reflection, and angle of incidence and angle of reflections are always equal. That is laws of reflection which is studied in class 10. Okay, so this is the structure where the ray going from rarer to denser. तो तुमने यहाँ पे दो तीन चीज पढ़े, क्या क्या पढ़ा, कैसे डायग्राम बनाना है, wherever the light incident वहां पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा. Normal with the incident ray is the angle of incidence. ओके रिफ्रैक्टेड रे कैसे पता चलेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा रे कहां घुस रहा है, डेंसर मीडियम में घुस रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा. रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे वी डोंट ड्रॉ ऑलवेज. ओके ओनली हियर आई एम शोइंग यू. रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा इन द सेम मीडियम. ओके अब हम क्या करते हैं, सेम फिगर फिर से बनाएंगे, बट now I'm saying N1 is greater than N2. That means this is the denser medium and this is the rarer medium. Okay, light going from where to where class? Now the light going from denser to rarer medium. So this is the point of incidence at the on the interface. So here what I have to draw? I have to draw a normal. And then what is this? This is angle of incidence. Okay, the light is supposed to go in this direction. Okay, but what will happen? The light is going to the rarer medium, so it will bend away from the normal. Where is the normal? Towards left. That means it will bend away from the normal. That means it bend ऐसे हो जाएगा. So it is bending away from the normal. यहाँ पे bend हो गया. So the refracted ray with the normal is called angle of refraction. And at the same time, there will be one part of the light which is reflected back with the angle of reflection r dash. Okay. So you have to understand two things here. One, लाइट जब डेंसर मीडियम में घुसता है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. लाइट जब रेयर मीडियम में घुसता है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके नेक्स्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे पता चलेगा? पहले लाइट का स्ट्रेट पाथ बनाओ, ड्रॉ द एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट. ओके एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट देखो यहाँ पे, सो उसका बेंड कराओ टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके इफ यू डोंट ड्रॉ दिस पाथ, दिस स्ट्रेट पाथ, देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा. तो ये ड्रॉ करना बहुत जरूरी है. मैंने वही ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको फिर रब कर देना क्लास. ओके नाउ वी अंडरस्टूड दैट व्हेनेवर देयर इज अ रे ऑफ लाइट अंडरगोस अ चेंज इन मीडियम it bends. Okay, but there are two special cases where light doesn't undergo bending. Okay, वो दो cases क्या है? When there is a no refraction, though there is a change in medium, okay, but there is no refraction. कैसे? So पहला ये नोट के अंदर लिखा हुआ है क्लास, N1, N2. There are two mediums which has different refractive index. They are not equal. That means different refractive index. That means the medium is changing. Okay, but if the light falls perpendicular to the interface, light is falling perpendicular to the interface. So what is the basic theory say? At the point of incidence, I have to draw a normal. So this is only the normal. Then what is the angle of incidence? 0. In that case, the angle of refraction also becomes 0. So light doesn't undergo bending; it goes straight. So this is the first case where the light does not undergo bending, does not undergo refraction. When तुम क्या लिखोगे? When the light doesn't undergo refraction,
तो when the angle of incidence is 0, एक आंसर. या तो when the light falls perpendicular on the interface. There are two answers for this. दोनों का मतलब सेम होता है. If you say the light falls perpendicular on the interface, that means I am trying to say the angle of incidence is 0. Okay. Next case. There are two mediums N1, refracting index N1, refracting index N2, but in anyhow the refracting index value becomes equal. तो जब refracting index value equal हो जाएगा तो मैंने पढ़ाया हुआ है लाइट अगर ऐसे घुसा so it will go straight, no refraction, because refraction तब होता है, बेंडिंग तब होता है जब मीडियम चेंज होता है. मीडियम चेंज तब होता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज होता है. बट यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सेम है. सो देयर आर टू केसेस व्हेन द लाइट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन मीडियम. द फर्स्ट केस व्हेन द लाइट फॉल्स perpendicular to the interface, or when the angle of incidence is 0. Next, when there is no change in medium with respect to refractive index. हाँ, मैंने बोला यहां से ना एक पैराडॉक्स क्वेश्चन पूछ सकता है. Light undergoes from water to air with having same refractive index value. That means the light will not undergo change in medium. Water और air देख के नहीं काम करना है, refractive index देख के वैल्यू काम करना है. Okay. Next is laws of refraction. Now, what is laws of refraction? So the first law you studied, the incident ray, the refracted ray, and normal all lies on the same plane. Okay, this is first law. तो इस law को लिखने के लिए always you need a ray diagram class. So whenever they ask you laws of refraction, there are two laws. One is first law, जिसके लिए तुम ray diagram बनाने का जरूरत नहीं. Next is second law. Second law is also called as Snell's law. Whenever they ask you to Snell's law, for example, तुम्हें एग्जाम में बहुत बच्चों वाला सवाल पूछ दिया, what is Snell's law? तो तुम विद रे डायग्राम बना के दिखाओगे. विदाउट रे डायग्राम तुम स्ट्रेस पर नहीं दिखाओगे. ठीक है ना. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल ये है N1, ये है N2. आई एम सेइंग N2 इज ग्रेटर देन N1. तो इसका रे डायग्राम कैसा होगा? यहाँ पर मुझे नॉर्मल बनाना है. सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. Normally the ray is going like this. It will bend towards the normal. Why towards the normal? Because it's going entering denser medium, right? So this is angle of refraction. Okay. So what is the first law? The incident ray, the refracted ray, and the normal on the interface all lies in the same plane. ये पूरे के पूरे सेम बोर्ड में है, सेम प्लेन में लाई करता है always. Next, second law. The sign of angle of incidence by the sign of angle of refraction. The sign of angle of incidence by the sign of angle of refraction. This ratio for any two given pair of media, एक fixed pair of media होना चाहिए, air and water. एयर एंड वाटर ले लिया, उसमें डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया और डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लिया. उनका जो रेशियो मानेंगे ना वो ऑलवेज कांस्टेंट आता है. ठीक है ना. मैंने क्या क्या सुनो, मैंने एक फिक्स पेयर ऑफ मीडिया ले लिया. पेयर मतलब दो मीडियंस. एक ए ले लिया फॉर एग्जांपल, एक ए ले लिया, एक वाटर ले लिया. उसमें क्या किया मैंने, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला, अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाला और उसको इसमें डाला साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और मैंने देखा सारा रेशियो सेम आता है. It is always a constant for a fixed pair of media, and that constant is nothing but refractive index of medium 2 with respect to 1. Okay, ये होता है Snell's law, sin I by sin R. So that the Snell's law say. Now, अब ये 2 with respect to 1 होगा कि 1 with respect to 2 होगा, ये कैसे पता चलेगा? Okay, इसके लिए मैंने एक थ्योरी लिखा है, how to apply Snell's law in numericals or in derivations. Later on during this chapter, you have to apply Snell's law in so many cases. Okay, there you don't have to search which is the angle of incidence, you don't have to search which is the angle of refraction. तुम्हें ये सब देखिए, सिर्फ डेफिनेशन के मैंने बताया है. Refractive index 2 with respect to R is sin I by sin R. लेकिन in generalized way, for example, लाइट कहीं से कहीं भी ट्रैवल हो रहा हो, ठीक है ना, भूल जाओ लाइट यहां से यहां ट्रैवल कर रहा है कि यहां से यहां ट्रैवल कर रहा है, फॉरगेट अबाउट इट. लेट दिस एंगल इज थीटा 1, लेट दिस एंगल इज थीटा 2. कौन सा आई है कौन सा आर है, फॉरगेट अबाउट इट. लेट दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N1, लेट दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N2. नाउ सी बेसिक देसी वे टू अप्लाई Snell's law. इफ आई से 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मैं 1 का निकाल रहा हूं ना, 1 का निकाल रहा हूं, तो 1 के ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा 2. सो इट विल बी sin थीटा 2 बाय sin थीटा 1. अगर मैं बोलूं 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो मैं 2 का निकाल रहा हूं ना, तो 2 के ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा 1. सो इट विल बी sin थीटा 1 बाय sin थीटा 2. बस यूज दिस बेसिक कॉन्सेप्ट. यहां पे क्या मैंने देखो 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, 2 का निकाला ना मैंने,
तो 2 के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? आई साइन आई बाई साइन आई। अगर मैं 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 करूं तो 1 का निकाल रहा हूं, तो 1 के अपोजिट एंगल क्या है? आर, देन इट विल बी साइन आर बाई साइन आई। I hope you understand how to apply Snell's law class. Okay, so please see nicely and there should not be any confusion how to apply Snell's law. Okay, I hope you understand class. Snell's law कैसे लगाया, किस तरीके से लगाया? Okay, now see, I told you two things, that when the light undergoes moving from rarer to denser medium, मैंने इसे दो चीज पढ़ने बोला ना, that if N2 is greater than N1, it is denser medium and this is rarer medium, right? क्योंकि N2 बड़ा है and light is going from rarer to denser medium like this. then यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा. so what is this? This is angle of incidence, right? मैंने क्या बोला था? पहले देखो कि ये स्ट्रेट कहाँ जा रहा है, ठीक है ना? तो अगर ये वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसका वैल्यू मान लो 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री होगा. फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. अब मैंने बोला था सिंस द लाइट इज गोइंग टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड राइट टुवर्ड्स द नॉर्मल. कैसे पता चलेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल? दिस वी कैन आइडेंटिफाई यूजिंग द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा रिफ्रैक्टिव रे के साथ वो आर है. तो इफ आई अप्लाई स्नेल्स लॉ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 का निकाल लो, तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या है? साइन आई बाई साइन आर. 2 का निकाल लो, ऑपोजिट एंगल क्या है? साइन आई बाई साइन आर. ओके, तो N2 बाई N1, इसको तो ऐसे लिखेंगे ना, N21 is N2 by N1, that is sin I by sin R. These angles are very small. Since these angles are very small, so sin I is similar to I sin R is similar to R. So I can say this I by R. So N2 by N1 is I by R. Now see, what is the condition we have used? Since N2 is greater than N1, that is N2 by N1 is greater than 1, that means I by R is greater than 1, that is I is greater than R. यहां से क्या प्रूव हो गया कि जब लाइट डेंसर मीडियम में घुस रहा है तब N2 ग्रेटर देन 1 है. तो इस कंडीशन को अगर मैं यहां डालूं स्नेल्स लॉ में, तो I बड़ा है R से. दैट मींस अगर ये I है तो R इससे छोटा होगा. इससे छोटा R कब होगा? जब रे इसके अंदर घुसेगा, तब तो ये R होगा ना. तो ये R ये I से छोटा होना चाहिए. तो यहां से मुझे पता चला कि लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा. कुछ समझ में आ रहा है क्लास? अगर यही चीज मैं ऐसा कर दूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इंटरफेस N1 N2 एंड इफ आई से N1 इज ग्रेटर देन N2 नाउ, सो लाइट ऐसे एंटर किया. ओके, यहां पे क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. द लाइट सपोज टू गो इन दिस डायरेक्शन, दैट मींस ये R I के बराबर हो गया. तो ये R छोटा होगा कि बड़ा होगा I से? अगर छोटा हुआ तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा. अगर बड़ा हुआ R तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा. अगर अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो सी नाइसली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द रे. अगर रिफ्रैक्टिव रे इधर चला गया, दैट मींस दिस इज R. इन दिस केस R इज ग्रेटर देन I हो रहा है. और अगर लाइट यहां चला गया तो दिस इज R. इन दिस केस R इज लेस देन I हो रहा है. सो वी नीड टू चेक आउट वेदर I इज लेस देन R और ग्रेटर देन R. तो यहां से क्या पता चला? अगर डेंसर मीडियम में गया तो अगर मैं अप्लाई दिस फॉर्मूला स्नेल्स लॉ लगाऊं तो I बड़ा आ रहा है R से. दैट मींस लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ताकि R का वैल्यू छोटा हो जाए I से. लेकिन अगर ऐसे गया तो देखो, तो N2 by N1 I by R आया था वहां से, ठीक है ना. यहां से क्या आ रहा है? N1 is greater than N2, that means N2 by N1 divided by N2. N2 by N1 क्या हो जाएगा? I by R. तो यहां से क्या आ रहा है? R बड़ा आ रहा है I से. R उधर चला गया, so R is more than I. तो अगर if this is I, तो अगर R को बड़ा होना है तो it will bend away from the normal, so that R should be greater than I. So these are the two mathematical proof to show you how the refractive angle is sometimes more or less, or how we understand the light ray bend towards the normal or away from the normal. Clear? तो यहां से मैं पता कर सकता हूं. I hope you understand. So the next topic is reversibility of light. Okay, इस टॉपिक से हमें सिर्फ कंफ्यूजन याद रखना है और थोड़ा बहुत डेफिनेशन याद रखना है. What is reversibility of light? So what the definition say? Whenever light undergo multiple reflection and diffraction
एक लाइट ना मीडियम को चेंज करते करते बार बार मीडियम चेंज हो रहा है, सो एज सून एज द मीडियम इज चेंजिंग लाइट बेंड्स, दैट इज रिफ्रैक्शन, एंड whenever there is a refraction there is some reflection. तो एज मल्टीपल नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस अगर होगा तो मल्टीपल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस भी होगा क्लास, राइट? So whenever light undergoes multiple refraction and reflection, and if the light is allowed to return back, it will retraces its path. That is called reversibility of light. तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये इंटरफेस है सेपरेटिंग टू मीडिया. आई एम सेइंग N2 is greater than N1. कोई भी एक लाइट को भेजो, आया, so it is going from denser to rarer or rarer to denser. N1 छोटा है, N2 बड़ा है. That means this is denser medium and this is rarer medium. That means it's going towards denser medium, right? तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा क्लास? एक normal. This is the angle of incidence. So it will bend towards the normal. क्योंकि denser medium में घुसा. So at this point there is refraction also and reflection also. So I'm not drawing the reflected angle, reflected ray. Okay, we know this is. So whenever light undergoes refraction, मल्टीपल रिफ्लैक्शंस, मतलब और एक मीडियम ऐसा हो गया और एक मीडियम ले लेते हैं, फिर से आपको रिफ्रैक्शन हुआ. ऐसा करने के बाद अगर मैं इस लाइट को वापस भेज दूं, इफ आई अलाउ द लाइट टू रिटर्न बैक, वापस कैसे भेजूंगा? यहां पे एक प्लेन मिरर रख दो, प्लेन मिरर, सच दैट द मिरर इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टेड रे. ओके, तो अब ये क्या होगा, ये लाइट को क्या होगा, ये लाइट वापस जाएगा रिफ्लेक्ट होके. तो वापस जब जाएगा वो कोई भी दूसरे पाथ से जा सकता है ना. तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है, वो कोई दूसरे पाथ से नहीं जाएगा, दूसरा पाथ नहीं होगा, इसी पाथ को रिट्रेस करेगा. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. ओके, इस टॉपिक से हमको क्या पता चलता है कि डिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 with respect to 2 into 2 with respect to 1 is always 1. Okay, or we can say defective index of 1 with respect to 2 is a reciprocal of 2 with respect to 1. Okay, yeah, this I will use in numericals. If I say defective index of glass with respect to water, that is 1 by defective index of water with respect to glass. उल्टा हो जाता है. I hope you understand, class. This is the conclusion of principle of reversibility of light. ठीक है ना? See, 1 with respect to 2 and 2 with respect to 1 is the multiplication 1 होता है. Okay? Now, इसका हम न्यूमेरिकल में कहाँ यूज करते हैं? सुनिए. There are multiple mediums, for example, N1, N2, N3, N4, and for example, this is N5. मैंने बोला calculate 5 with respect to 1. 5 with respect to 1 का वैल्यू निकालो. तो कैसे निकालना है? 2 with respect to 1, 2 with respect to 1 into 3 with respect to 2 into 4 with respect to 3 into 5 with respect to 4. इससे 5 with respect to 1 आ जाएगा. कैसे आएगा देखो, चेक करके देख सकते हैं. N2 by N1, N3 by N2, N4 by N3, N5 by N4. देखो तो सारे कर रहे हैं. N4, N4, N3, N3, N2, N5 by N1 आ गया, 5 with respect to 1 आ गया. क्या? तो हम अगर इस तरीके से मल्टीपल अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यूज होंगे ना, तो आई कैन कैलकुलेट दिस. ओके, और मान लो ये भी 1 है, ऊपर भी 1 मीडियम है, नीचे भी 1 मीडियम है. इसका मतलब क्या? इसका मतलब 2 with respect to 1 into 3 with respect to 2 into 4 with respect to 3 into 1 with respect to 4 is always 1. क्योंकि ये और ये सेम है. इसको इंटू करके देख लो, 1 आएगा. Okay, so this is the use in numericals related to reversibility of light. Okay, that's all for this video, class. In the next video, we will study the same refractive index value, but in terms of some other factors. Till now, we understand the refractive index value in terms of velocity of light, in terms of wavelength of light. Okay. Next topic, next video, we will study refractive index of any medium in terms of real and apparent depth. So let's go to the next video. Thank you, class.